Obviously, you can't drive cars until you're 18. ये तो हाँ. चलिए ठीक है. You can't drive a car until you're 18. ठीक है. Did you start with like go-karting and all? Actually, I never did go-kart. Oh wow, 2023 we are sitting in नोएडा भंगेल में भी अभी रेसिंग कार स्कूल चालू हो चुका है. आपका पर्सनल कार कौन सी है ये बताओ. ये सब तो ठीक है, ये जो दुनियादारी अलग है, खुद की कौन सी गाड़ी है? रेस कार में क्या है, इवन फॉर बेसिक प्रैक्टिस वो रेस ट्रैक भी हायर करना है, उसके साथ मेडिकल स्टाफ होता है, मार्शल्स होते हैं, फैसिलिटीज़ होती हैं पूरी, एंड रेस कार होती है. रेस कार का एक सेफ्टी लेवल होता है. देन यू नीड द कोचिंग, यू नीड द इंजीनियर्स, यू नीड द मैकेनिक्स. यार हमारे पास BIC है नोएडा में, दिल्ली में, बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट. यहाँ पे क्यों नहीं ट्रेनिंग अकेडमी है? Yeah, that is the biggest thing I don't understand, to be honest. कितना स्पीड में आज तक चलाया सबसे ज्यादा? I think 300 plus वहाँ पे आराम से. You have a Formula One circuit in India. True. It's a dream come true, and honestly, man, it's one of the best tracks in the world. एक point के बाद human body can't handle it, right? And I think हमारे देश में, you know, unfortunately, रोड में डिसिप्लिन ज़्यादा होता नहीं है. And ड्राइविंग आप सही भी कर लो, कोई रोड क्रॉस कर लेता है आके, you know. So उस वजह से मैं थोड़ा ना डिफेंसिव और कॉशियस ड्राइविंग करता हूँ रोड्स में. टी-शर्ट ब्रो, कैमरा के पीछे वरुण है, उसकी टी-शर्ट बड़ी कूल है. हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, आई एम आबिर लाहिरी, यू आर वाचिंग ABP लाइव पॉडकास्ट, and today in conversation is somebody who is fond of vehicles, not exactly vehicles, like racing cars. Speed इनकी लाइफ में बहुत सारी है. Lee Keshav, welcome to ABP live podcast. How Hey are guys, you? how are you? For Thanks all for those, having me. Pleasure is all mine. Not the Hero Honda pleasure, but but for all those people who don't know about Lee, let me just give you a small brief. He is basically a product designer by profession, but also not exactly an enthusiast, but a professional racing car driver, race car driver. कहाँ से शुरुआत हुई उससे start करते हैं. Are you like a proper Delhiite or? I am full Desi boy, yes. Super. And ये गाड़ी कहाँ से आ गई लाइफ में, मतलब? Yeah, you know, it's the most like basic story you could say. I just saw it on TV, you know, racing on TV. ठीक है. Formula One growing up, and Narayan Karthikeyan being the like the yeah, exactly. Face Like, of- it was just getting there to Formula One. This is again early 2000s, late 90s, and वही होता है ना कि यार ये क्या है, you know, like it literally started with that curiosity. Okay. कि ये है क्या and how do I get here, you know, and उसी से passion got built. And thankfully internet arrived in our lives, so मैंने बस Google में जा के I literally googled how to become a racing driver. और उससे आंसर जो मिला वो सही था. मतलब ढूंढना पड़ा back then, but you know I eventually found it. Okay. And I think मेरे लिए जो revelation था वो ये था कि you know you don't have to be 18 years old to drive a race car. Really? मेरे को driving का बहुत वो था thrill, you know, from a young age. But you know obviously you can't drive cars until you're 18. ये तो चलिए ठीक है. You can't drive a car until you're 18. ठीक है. Technically the rules say in public roads, private roads में you can. So अगर घर में कोठी हो तो आप बिल्कुल चला ही सकते थोड़ा आगे पीछे तो कर ही सकते हैं. ठीक So you know I was just like amazed about it, and उसमें आया कि you know you can at 12-13 you can actually drive on a race track. So उससे I got like really. Did you start with like go-karting and all? Actually I never did go-karting. Till date? I did karting from like a fun ride, you know, अपू घर में. Okay. You know, and obviously उससे थोड़ा सा idea तो लगा कि what I want to do, but I didn't do competitive go-karting. Okay. I jumped straight to like racing cars. Racing cars. Yeah. Super. PlayStation. But how did that start? I guess you were born in Dehradun, you stayed there for a while, then you moved to Delhi. Yes. But then how come, like when you were researching online कि चलो देखते हैं कैसे बनते हैं, ये बनते हैं, वो बनते हैं, then हुआ क्या? Start कैसे किया? रेस कार तो थी नहीं घर पे. Exactly. And race car in थी, and you know there's no racing background in my family. So ऐसा भी नहीं था कि I could talk to someone and understand है क्या, you know. And it was. मैं एक बार वो स्लो साइकिल रेस में भागा था. Does that count? मतलब. Maybe any kind of competitive sport. I guess. Super. But उसके बाद you know I just found some like training schools abroad. और एक फिर मिला, you know, like obviously you try to find something nearby. यूरोप में तो बहुत होता है, but I found something in Thailand. They had a race track there. Okay. And there was a British guy, he was running a training school there in the summer. And somehow I convinced my mom कि you need to take me there. So we went there, and my mom thought ये ना कुछ ऐसी go-karting type का होगा, you know. So I didn't reveal all the information obviously. And this is which year? This is which year? This is I think 2010 or something. Oh wow, 2023 we are sitting in नोएडा भंगेल में भी अभी रेसिंग कार स्कूल चालू हो चुका है. जरूर आए. So yeah, we went there, and then my mom saw the race track,
And my mom was like, what the hell is this? You know, ये तो बहुत dangerous लग रहा है. You know, I was And like, you were too what, late. 15, 16? Yeah, exactly. So at that point, you know, just I drove with this guy, and it was a beginners program. Okay. But I was pretty good. And he's like, यार इसके अंदर तो talent है. You know, and then my mom is like, okay, अब तो और pursue करना पड़ेगा, follow up करना पड़ेगा. And then back then I was trying to also race bikes. So, you know, I was trying to find my way. I was trying to figure out because I was a huge fan of MotoGP. Okay. So MotoGP, Formula One, both. And then I kept writing to Red Bull because Red Bull उस time में बहुत सारा development कर रहे थे drivers. Invest काफी कर रहा था. Yes. So you know they had the training program and everything. So 3 years I wrote to them every year. I was like, please invite me, and eventually they were like, अच्छा आ जाओ. You know, like persistence. You know. Is it actually that fun? जितना बाहर से दिखता है कि Red Bull होगा और ये होगा वो होगा. Yeah, they are very strict. Huh? I think you learn. See, Red Bull, you look at them and you're like, wow, what a fun brand, but they are serious, man, which is a good thing. True. वहाँ पे it's all merit based. It's my dream to actually learn skydiving from Red Bull. That will be amazing. भाई Right? I've क्या done skydiving once. academy It's pretty है. crazy. Yeah. So I think Red Bull का एक चीज अच्छा था, they were producing content, you know, so exposure था. And it wasn't कि हाँ you're already a huge celebrity, so Red Bull is your sponsor. They were bringing up a lot of new talent, you know, which proof we can see today with Sebastian Vettel or Max Verstappen. So I went to Spain. Now, honestly, I was not qualified to be in the training program. Because of age? Age, yeah, I was already, I think, 16 or 17 by now. उनका 15 का cut off था, you know. अच्छा, उनका छोटा कट ऑफ है हाँ. कि उससे पहले आपको आना पड़ेगा. Academy में. And the funny thing is, वो 15-year-old भी इतने professionals थे because they were racing since they were 8-9 years old. मेरा कुछ experience नहीं था. I had just done like some basic training. So, but they said, you know, तुम्हारे दिमाग में कुछ कीड़ा है, so तुमको बुला लेते हैं, you know, like let's call you and let's figure out what's on your mind. So it was really good because we met them and you know they just like gave some good guidance and direction. Okay. And क्या होता है, you know, when you go at that level of professionalism and scale, थोड़ा mind open हो जाता है, you know, and I think that's what happened. थोड़ा mind open हो गया and we saw कि इसका scale क्या है and they made us understand कि you know this is a serious sport and ये कोई ऐसा side टाइम पास नहीं है कि आओ चिल मारो और you निकल have to लो. invest every single day because you know when you see to get into any competitive sport you have to live a very different life and आपको बहुत सारे sacrifices करने पड़ते हैं, lifestyle, all these to get there. So it's a high risk high reward kind of life. So I think that was very helpful to get that exposure. And उसके बाद then you know they also recommended to me that you know you should try cars because I think bikes में अच्छा, primarily you were doing only bikes. I was trying for bikes. Okay. But I think the risk was that you know if I fall तब तो मैं फिर 3-4 महीने injury में बैठा रहूँगा, right? And so I think then when I switched to cars, I really finally connected. I think for me like वो जब first time मैंने training करी cars में, I was just like fastest from the get go, you know. So I went for a training program India में ही and we were अच्छा, इंडिया में ट्रेनिंग होता है? हाँ. कहाँ? मुझे बताओ, मुझे ये नहीं पता. Unfortunately, it's for us. It's in the south. So Chennai, Coimbatore. Okay. So I finally went there. मेरे को पता भी नहीं था वहाँ पे And race anybody tracks can go and learn there? any level, yes. But like for example, a guy of 45 years of age, can he go and learn Age there? is not a limit. Yeah. Oh, so cool. So I went there and वहाँ पे there were a bunch of people who had more experience than me. मैंने karting भी नहीं करी थी, you know. And I was training with this guy called Mr. Aabir Ibrahim. He's had a lot of legacy in Indian racing. Okay. So, but he's also very strict. So I still remember हम लोग तो वहाँ आराम से गए and there were a couple of other Delhi guys with me as well, which I met on the plane, you know, like we were all going for this training program. Okay. वहाँ पे गए, हमने कहा you know cars चलाएंगे race track में कितना मजा आएगा, but he was so strict, man. He had zero tolerance for like time pass kind of guys. He's like, you know, guys like you come here all the time. आते हो मस्ती करके चले जाते हो and you know you don't realize कि इसमें safety and discipline कितना important है. So when I spoke to him, you know, I understood his mindset. And when I started driving, उन्होंने बोला speed का नहीं है, consistency है. That is most important. So technique पहले, then speed. और हमारा क्या होता है, हम जाते हैं पहले speed करते हैं, you know, so technique नहीं सीख पाते. So I think those fundamental courses were very helpful. And then I was just fastest throughout the day. मेरा every lap was faster than everyone else of their fastest lap. So clearly, like, you know, they noticed that okay, this guy has some talent. So I think instinct is very important. ठीक है.
And then after that, I qualified for the Volkswagen Polo Cup in India. Okay. So that was my big break in national championship. Okay. So I came in, qualified I think top 3 only, and started racing. And I think वहाँ पे जाके फिर वो जो real competition start होता है वो start हुआ. Okay. And I think then I got to learn a lot more कि अकेले नहीं आते because you know I used to just show up alone, you know, just fly down for the race. And तो वैसे नहीं जाना चाहिए यार सबके पेरेंट्स हैं, कोचेस हैं और यू नो ट्रेनर्स होते हैं और वो मेरे को बुली करना शुरू, यू नो ये कौन पहले तो सब अच्छे थे, यू नो लाइक अरे वाह यू नो न्यू किड, बट जस्ट बिकॉज़ यू सक्सीडेड बट देन आई स्टार्टेड बीटिंग देम, यू नो, सो उनको एकदम से ये हो गया कि यार अलग ईगो हसल है भाई. सो यू नो दिस इज ऑल द स्टफ यू हैव टू लर्न. सो आई थिंक मेरे को आई रिमेंबर वंस सम गाइज डैड ऑलमोस्ट अटैक्ड मी लाइक फिजिकली. And he was a really nice guy, you know, like, but he just got so angry that I beat his kid that he literally charged towards me. And I was like, ये होता भी है, you know, but मतलब ये मेरे लिए सुनने शॉकिंग है. Yeah, I was like amazed because, to be honest, like, see, most people were actually very helpful because the racing community, उसमें, I think people really want to see Indian drivers succeed, you know, because this is a sport which is very aspirational. I think everyone wants the next F1 driver. So the community जो है वो बहुत ही supportive है. But the only challenge I always found was the parents. Parents थोड़े से charge हो जाते हैं. And they are not the like the sportsmen, right? They won't have the sportsman spirit. उनको होता है यार मेरा बेटा क्यों नहीं आ रहा है नंबर 1, you know, ये क्यों उनको बीट करे तो अभी आया, हम तो 5 साल से कर रहे हैं, you know. True. So first year onwards only I started beating a lot of people and that didn't make some people happy. But thankfully जो actual लोग थे जिनको impress करना था, they were impressed. And so yeah, that's how I got my initial break. So, यार एक अजीब सा सवाल, मतलब अजीब तो नहीं है बट ये अब भी फटाक से पूछने के नहीं है. ट्रैक में किस चीज से सबसे ज्यादा फटती है आज भी? मतलब जब भी जाते हो फटती तो होगी यार, आई एम श्योर, बिकॉज ये स्पोर्ट ऐसा नहीं है कि आराम से चिल कर रहे हैं और आओ भाई एक राइड मार के आते हैं, वैसा तो है नहीं. तो मेरे लिए टू बी ऑनेस्ट इट्स द बैंडिट्स वी कॉल देम. सम ड्राइवर्स जो आते हैं ना वो उनके पास पैसे भी होते हैं, ठीक है, और टाइम भी होता है, बट उन पे ना थोड़ा सा इंटेलिजेंस कम होता है ऑनेस्टली ऑन द रेस ट्रैक. सो व्हेन यू एंड अप विद दैट 1 or 2 गाइज जो बिल्कुल ही शेडी टाइप के होते हैं, इनको ड्राइविंग का कुछ डिसिप्लिन ही नहीं होता, उनसे सबसे ज़्यादा डर लगता है. क्यों? क्योंकि वो कहीं भी भेड़ सकते हैं. कहीं भी भेड़ देंगे यार, और ऐसा हुआ भी है मेरे साथ, यू नो, बिकॉज रेसिंग में इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिस्पेक्ट एवरीवन. आप चाहे कितने भी कंपेटिटर्स हो, आप इवन इफ यू वॉच मैक्स वर्स्टैपेन और लुइस हैमिल्टन कंपीटिंग, दे डोंट लाइक ईच अदर एटलीस्ट ऑन द रेस ट्रैक, बट देयर इज सम म्यूचुअल रिस्पेक्ट because there is an inherent risk in the sport. True. So आप किसी से mess नहीं करते, but एक दो आ जाते हैं wild cards जो सोचते हैं कि मैं हीरो हूँ, you know, and ये rich kids होते हैं, इनके पास बेंटलीज और फरारीज होती हैं घर में, तो उनको लगता है कि मैं तो बहुत प्रोफेशनल हूँ, you know, मतलब मेरे को बहुत स्किल है, बट वो रेस ट्रैक में ड्राइविंग डिसिप्लिन चेंजेस कम्प्लीटली. आपका पर्सनल कार कौन सी, ये बताओ. ये सब तो ठीक है, ये जो दुनियादारी अलग है, खुद की कौन सी गाड़ी है? नॉट अ स्पोर्ट्स कार, ठीक है, बट आई वर्कड वेरी हार्ड फॉर 10 years, ठीक है, एंड आई बॉट अ BMW. सो कूल. व्हिच वन? 7 Series. ये दिल्ली में इतना ट्रैफिक है, इतना रोड नॉइज, पोल्यूशन एंड हॉकिंग है, दैट यू नो आई डोंट लाइक रोड रेज. सो उस कार में ना एकदम पीस होता है, आवाज बाहर का सुनाई नहीं देता, बाहर की सुनाई नहीं देती. नॉट अ गुड थिंग है लॉजिकली. ना मतलब इतना सुनाई दे जाता है कि जितना जरूरत है, यू नो, बट जस्ट सम म्यूजिक ट्रैफिक में व्हेन आई एम स्टक आई एम जस्ट काम, बिकॉज रोड रेज इज सच अ बैड थिंग. सो व्हिच इज ट्रू. मैं आराम से बैठता हूँ कार में. यार अच्छा चलो, अब सिंस यू वर मेंशनिंग अबाउट द साउथ में जो एकेडमी है, आई वुड लाइक टू डिग डीप इनटू इट. फॉर एग्जांपल, इफ अ रैंडम गाय फ्रॉम अ कॉर्पोरेट जॉब हु वांट्स टू एक्चुअली लर्न इट, हाउ शुड ही और शी चेज इट? See, I am the best example of it. You know, I'm a tech guy. Yeah. I am just like anyone else sitting in an office, you know, working not even 9 to 5, more like 9 to 9, you know. So I think now I think the culture thoda sa change ho raha hai. You know, people are pursuing their passions and different things. So I would say you have to first decide कि ये career है या passion है, because career का path बहुत different होता है. True. Right? Like मान लो पैशन ही है किसी के लिए, पैशन के लिए, then I would say approach it like anything else. Just like आप वीकेंड में क्रिकेट खेलते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, right? और बैडमिंटन, और you know रोड ट्रिप्स में जाते हैं. It's just like that. That's how I started. रेसिंग कार कहाँ से आएगी? हाँ वो अलग है. You know, so that's why you go to these academies. Okay. And India में do we have something in Delhi? We don't have a training program in Delhi. Unfortunately, okay. That is actually something, you know, I'm trying to work on and create something in Delhi. Okay. But I think you can start with go-karting.
to be honest. Okay. You know, and go karting है, नोएडा में भी है. कई जगह पर. And you start with that, and then I think if you want to do some professional courses, at least for people in the north, you have to go to Chennai or ठीक है. Coimbatore. Which makes sense. Is it very costly? Relatively, actually, India is the cheapest. Okay. And what is the figure if you don't mind sharing? Yeah, Like I for a think, basic. I think you can even start a basic course with like 30,000-40,000 rupees. Not bad. It's a 5-day, 7-day course. No. नहीं, it will be like 1 or 2 days. But the thing is, see, race car का challenge क्या है कि it is inherently an expensive sport because see अगर आपको practice करना है cricket में, football में, आप अपने आप ही एक बॉल उड़ाओ कर सकते हो. ग्राउंड फ्री का है. Develop your skills. True. रेस कार में क्या है, even for basic practice वो रेस ट्रैक भी हायर करना है, उसके साथ मेडिकल स्टाफ होता है, मार्शल्स होते हैं, फैसिलिटीज़ होती हैं पूरी, एंड रेस कार होती है. रेस कार का एक सेफ्टी लेवल होता है. देन यू नीड द कोचिंग, यू नीड द इंजीनियर्स, यू नीड द मैकेनिक्स. सो वो इनहेरेंटली बहुत इन जनरल एक्सपेंसिव है बिकॉज द वेन्यू इज सो एक्सपेंसिव. आई थिंक अब थैंकफुली इंडिया, बिकॉज इंडिया में सर्विसेज आर वेरी चीप रिलेटिव टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. आई थिंक अब तो बहुत सारे फॉरेन के ड्राइवर्स इंडिया आते हैं. यार हमारे पास BIC है नोएडा में, दिल्ली में, बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट. यहाँ पे क्यों नहीं ट्रेनिंग एकेडमी है? Yeah, that is the biggest thing I don't understand, to be honest. सबसे बड़ा रेसिंग ट्रैक है राइट इंडिया का? Yes, it is the only Formula One track in India. इन इंडिया. और यहीं पे रेसिंग एकेडमी नहीं है? यहीं पे नहीं है. That is the biggest thing. There are, I think, some arrive and drive events. Okay. But it's not a training academy kind of thing. Okay. And मैं हमेशा, you know, whenever I talk to my peers in racing, I always say, यार यहाँ पे क्यों नहीं drive कर रहे हो? You have a Formula One circuit in India. True. It's a dream come true. And honestly, man, it's one of the best tracks in the world. And I'm not even exaggerating this. I guess I have drove there once. Oh, भाई. उसका जो scale है, भाई. पता नहीं चलता. And until you're inside and you're driving, you realize how massive it is. कितना स्पीड में आज तक चलाया हो सबसे ज्यादा? I think 300 plus वहाँ पे आराम से. मतलब लाइफ में आज तक सबसे फास्ट कहाँ चलाया है? I think see race track पे. हाँ race track. I have actually driven on the autobahns in Germany. Okay. And I think first myth ये था कि autobahn में हर जगह कोई speed limit नहीं होती. ऐसा नहीं होता. There are speed limits everywhere. Okay. There are only small patches जहाँ पे speed limit cancel हो जाती है. So जितना it's quite an experience, man, because आप वहाँ पे आते हो, speed limits होती हैं, फिर एक sign board होता है no speed limit, and then you just hear all the cars के engines downshift करते हैं and they just start flying. So I've done 300 on the public road in autobahn without the speed limit. Yeah. भाई कुछ दिखता है कुछ, मतलब यमुना एक्सप्रेस वे में किसी ने 120 पे अगर गाड़ी चले जाए जो कि नहीं जाना चाहिए, बट गलती से अगर चले जाए 100 के ऊपर स्पीड लिमिट नहीं जाना चाहिए, बट अगर कभी गलती से चले जाए उसी में लगता है कि ठीक है यार तेज तो चल रही है. यार आई थिंक होता है क्या है ना, मैंने आई हैव हैड क्रैशेस इन रेसिंग, सो मैंने वो साउंड सुनी है मेटल हिटिंग मेटल राइट. उसके बाद आई थिंक थोड़ा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है. आई वॉज जस्ट लाइक एनीवन एल्स, थ्रिल होता है, स्पीड करने का मन करता है राइट, एंड यू गेट एक्सेस टू फास्ट कार्स ऑल्सो. सो वो नेचुरली आपका इंस्टिंक्ट, स्पीड हमारे अंदर ही बिल्ट इन है, हमारे DNA में, यू नो, कुछ थ्रिल आता है उसमें. बट आई रियलाइज बहुत अर्ली थैंकफुली कि रोड्स में स्पीडिंग नहीं करनी, यू नो, बिकॉज हमारी जो ह्यूमन बॉडीज है वो अभी तो इवॉल्व नहीं हुई है इन स्पीड्स के लिए. तो आप कोई भी कार चला लो, आप मर्सिडीज चलाओ, कोई भी सेफ कार भी चलाओ, BMWs, एक पॉइंट के बाद ह्यूमन बॉडी कांट हैंडल इट राइट. एंड आई थिंक हमारे देश में, यू नो, अनफॉर्चुनेटली रोड में डिसिप्लिन ज़्यादा होता नहीं है. एंड ड्राइविंग आप सही भी कर लो, कोई रोड क्रॉस कर लेता है आके, यू नो. सो उस वजह से मैं थोड़ा ना डिफेंसिव और कॉशियस ड्राइविंग करता हूँ रोड्स में. ठीक है. एंड आई थिंक दैट इज द बेस्ट थिंग आई लर्न. ठीक है. ऑनेस्टली अगर मैंने रेसिंग नहीं करी होती, मे बी आई वुड हैव ऑल्सो बीन ड्राइविंग रैश, बट थैंकफुली आई डोंट. एंड देयर आर इनफ अपॉर्चुनिटीज जहाँ पे आप जाके स्पीडिंग कर सकते हो. हैव यू सीन एक्सीडेंट्स, लाइक बिग एक्सीडेंट्स? आई हैव बीन पार्ट ऑफ सम. ओके. बट ऑन द रेस ट्रैक. हाँ ठीक है, ऑन द रेस ट्रैक. हाँ, मेरा एक बारी एक हुआ था क्रैश इन द फॉर्मूला कार, एंड आई वाज टेकिंग अ टर्न एंड आई थिंक आई वाज a bit too fast. Okay. What is the definition of bit too fast? Just 1% over the limit. Which is 200. I was doing about 160, 165. अच्छा. On a corner. I was taking a turn. Okay. And there was a bit of a bump on the turn. So वो रेस कार इतनी लो होती है, वो ना पूरा फ्लैट हो गई उस पे. And I lost all steering control. And I went spinning like this. I hit a guardrail and a bunch of other things. And here's the funny thing. उस टाइम पे adrenaline इतना होता है that I was like, oh no man, I messed up. चलो, you know, निकल के गाड़ी को रिपेयर करके वापस जाते हैं. I came out of the car. The second piece of the car wasn't there, you know. The whole gearbox, everything came off. So, and then I realized कि I was in a big accident. And thankfully, but you are guarded, you are yes, having all protected in the race car. Race car is designed to crash.
So if it crashes, it will break in a way कि आपसे impact, it takes away the impact from you. But अगले दिन I realized कि I had like blue marks everywhere, all this, the sores of, crashing. वो सारा अगले दिन पता चला. So then I was like, okay, respect, respect the machine. Do you fear death? I fear untimely death. I think that's the difference. I think eventually we'll all pass away. This is just a machine. True. But I think सबका एक लाइफ में पर्पस होता है, राइट? हमारे सबके एक चेकलिस्ट होती है माइंड में कि ये करना है, राइट? सो आई थिंक अनटाइमली अगर हो जाए तो ऑब्वियसली आई फियर दैट, बट इफ यू डोंट फियर डेथ यू विल नॉट रिस्पेक्ट लाइफ ईदर. सो आई गेस दैट्स माय पर्सपेक्टिव. ट्रू. क्या प्लान है अब अगला, क्या करना है इसके बाद? या सो आई हैव बीन just like anyone, focused on work, काम कर रहा हूँ. इस पे फुल टाइम नहीं जाना है रेसिंग में? अब I think I'm pursuing it again. I think what I realized was एक point के अंदर एज गैप हो जाता है कि you won't make it to the academies. Then you realize कि यार end of the day it's a game of money and skill. एक नहीं चलेगा, दोनों चाहिए. And I'll be honest, ये हर स्पोर्ट में होता है, right? I'll give you an example. Like even when I was racing really well and I was winning on the national level in India. मैं abroad गया रेस करने and मेरा जो टीममेट था, he was a Russian billionaire kid, right? जितना मेरा पूरा साल की रेसिंग का कॉस्ट था उसका उतना प्राइवेट जेट का एक फ्लाइट का था, तो पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है. एंड आई स्टिल बीट हिम. सो माय थिंग इज आई थिंक लेकिन पैसा तो चाहिए भाई, पैसा चाहिए. द थिंग इज यू हैव टू मैनिफेस्ट समहाउ. एंड हर एम्बिशियस टास्क के लिए पैसा चाहिए होता है. वो आपका अपना पैसा है, कहीं और से आ रहा है, दैट्स अ होल डिफरेंट थिंग, बट यू हैव टू मैनिफेस्ट इट समहाउ. बट स्पॉन्सर्स हैव सपोर्टेड यू वेल? Anyone I've raced with, they've always been supportive. Either it was JK Tire or MRF or Volkswagen. I think they've always been supportive and they subsidize a lot. But होता है एक point के अंदर glass ceiling हो जाती है. True यार. So वो budget जाता है and I'll give some numbers because I think it's very helpful. हाँ, true. India में you can start racing with 5-6 lakhs also for a year. For a year? Yes. And अच्छा. वो तो आप फ्रेंड्स एंड फैमिली पेरेंट्स से भी जमा करके ले सकते हो. सी यू हैव टू मेक सैक्रिफाइसेस समवेयर. बट 5-6 लाख में कैसे आप मैनेज करोगे? कितने आप रेस करोगे? क्योंकि उनको वो सब्सिडाइज कर रहे हैं. बट गाड़ी वही दे रहे हैं रेस कार. आई एम टॉकिंग अबाउट द Volkswagen Cup. Okay. Which is they provide you the car. They give you the car, everything. You're giving them an entry fee, maybe up 8-9 lakhs होगा. But the thing is like the facilities you're getting and the infrastructure you're getting is worth 3-4 times more. Okay. But they are basically subsidizing it because it's a marketing exercise for them. End of the day. So that's how you benefit from it. True. Karting तो आप 10,000 से भी start कर सकते हो training. And लेकिन यार karting और असली कार में बैठने में difference है. I mean it's a for new kids, जो parents के लिए just to check that whether I'm built for to develop your skills basically. ठीक है. And उसके बाद national जो formula cars भी होती हैं, I think 15-20 lakhs में you can do the whole season. अब मैं 15-20 lakhs बोल रहा हूँ कि कुछ नहीं है, but नहीं agreed. मैंने कहा एक्सपेंसिव स्पोर्ट है, अगर आपको शूटिंग करनी है, शूटिंग के लिए भी गन तो खरीदनी पड़ती है, रेंज तो जाना ही पड़ता है, अगर आपको गोल्फ खेलना है, टेनिस खेलना है, हर चीज़ में कुछ ना कुछ होता है. इवन क्रिकेट में अगर आपको स्टेडियम लेवल पे खेलना है तो एक्सपेंसेस तो होंगे ही होंगे. फिर क्या होगा कि आप तो अपना ट्रेनिंग कर रहे हो, कोई और बच्चा कहीं और अकेडमी में जाकर ट्रेनिंग कर रहा है, तो फिर आपका स्किल उससे मैच नहीं होगा बिकॉज दे हैव मोर प्रैक्टिस. इट्स अ रिच ब्राइट स्पोर्ट यार, एनी विच वे. यस. It is. I think अब थोड़ा सा सोसाइटी चेंज हो रही है. I think अब अंडरडॉग्स का टाइम आ गया है. ठीक है. And so हाँ, इंडिया में इतना हो जाता है. बट इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं है यार अंडरडॉग्स के लिए. I think अब बन रहा है. I think होता क्या इवेंचुअली एक पॉइंट के बाद आपको फॉरेन जाना पड़ता है. वहाँ पे प्रॉब्लम होती है बिकॉज इंडिया में तो आप कितनी भी ट्रेनिंग कर लो, जैसी फॉरेन जाओगे ना, वो बाकी के जो बच्चे आते हैं वो यूरोप और अमेरिका के ट्रेनिंग से आते हैं. एंड द फैसिलिटीज आर सो मच बिगर. आई कैन गिव एन एग्जांपल ऑफ ओलंपिक्स फॉर एग्जांपल. In a country of over 1 billion people, I think there is no doubt that we have the best talent in this country somewhere. हमारी facilities भी हैं. After Commonwealth जब हुआ था, हमने दिल्ली में इतने infrastructure develop करा. So वो world class facilities हैं. And we have some, world class players in India now जो trainings भी करते हैं, coaching भी करते हैं. So कितना training मिलता है. अब आप abroad जाते हो, रशिया से, चाइना से जो बच्चे आ रहे हैं, वो 12-12, 14-14 घंटे ट्रेनिंग करते हैं every single day. तो क्या होता है वो ना, ट्रेनिंग पे पीपल बीट यू. आपका चाहे स्किल भी ज़्यादा होगा, बट स्किल कैन ऑल्सो बी डेवलप्ड थ्रू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस. सो उसके लिए क्या होता है, इवेंचुअली एक पॉइंट के अंदर हमको फॉरेन ही जाना पड़ता है और ट्रेनिंग के लिए, एडवांस ट्रेनिंग के लिए. वहाँ पे वो ग्लास सीलिंग हो जाती है बिकॉज फाइनेंशियल्स जस्ट बिकम वेरी डिफिकल्ट. सो नेचुरली वो नेचुरल सिलेक्शन हो जाता है और रिच किड्स ही आ जाते हैं लास्ट में, वन वे और द अदर. ट्रू. सो
For me, it was like, अच्छा मैं पैसे कहाँ से लाऊँ, you know. So that's how I started working, and I think racing has been the carrot which has driven me towards my career as a product designer. And I was lucky that startup space is, you know, very huge in India. So I Can I mention your startup? Yes, yeah, of course. It's not a startup anymore, I guess. It's not a a pretty startup. big company. For all those people, no? Acha, okay, I shouldn't mention. Arey, well, you work for Hike. Yeah, I mean, so I'm a product designer. I'm the design head of Hike. But I've worked with some other startups too in India. And I think मेरे लिए जो inspiration थी वो यही थी कि how do I become successful and how do I manifest that success. True. And so you can imagine, like, you know, I want to race cars, but मैं घर में बैठ के कंप्यूटर में काम कर रहा हूँ. So you have to condition your mind, because हर चीज़ का एक timing और place होती है. True. So for me, it's like that's the carrot, you know. I want to become successful here, so I can go do that. So cool. So that's how I inspire myself. सही है भाई. On that note, बहुत सारा thrill, बहुत सारा passion, बहुत सारा speed आपको मिलता रहे. आप बढ़िया एकदम full power इंडिया का नाम रोशन करो. Represent. Represent, yeah. So goal is still to reach Formula 1. Okay. So I'm doing some training now. I'll be, you know, doing trainings in Formula 3, Formula 2, and building towards that Formula 1 journey. If I get to race in Formula 1, that's for, you know, the future to decide. But I will obviously give it my best. There's no age limit there, right? There is no age limit to enter, but there is some qualifications you require and the money. Okay. So I'm working on both. ठीक है. And अगर हो गया, so, you know, would love to bring Formula 1 back to India. Super. I think there's no reason why I shouldn't be here. Yeah. It's such a great business. It's such a great marketing tool for a country. And also India में कितना development हो गया in the last 10 years since F1 was here last. Right. And I think we'll be ready. We'll be ready to host Formula 1 again soon. And I hope I get to race there when that happens. All the very best to you. Thanks, man. Thank you very much. That was candid, wonderful conversation on ABV Live podcast. Thank you. Thank you.